in circular motion, we have seen last time about the angular velocity, the relationship between the linear velocity and angular velocity. And also we have seen its vector form. तो वेक्टर फॉर्म भी हमने उसका देखा था ऑलरेडी. तो अभी आज के लेक्चर के अंदर हमको उससे भी आगे जाना है. We have to understand what is the angular acceleration. Basically, in circular motion, there is a concept of angular acceleration. That is, we have to discuss it in detail in today's lecture. So let us do that. Okay, but actually, okay, so basically in circular motion the angular acceleration का जो concept है वो बहुत simple है. जैसा कि हम जानते हैं कि angular velocity is the rate of change of angular displacement, right? तो angular displacement जिस rate से change होता है तो उसको बोलते हैं angular velocity. Suppose there is a particle performing uniform circular motion and suppose that it starts from the point A here. तो इस A point से वो start करता है. ये है उसका initial position. Okay. Yes. And suppose that it in some time t it moves to the point B here. एक अलग point पे वो चला जाता है. Suppose B point पे मान लो वो चला जाएगा. Yes. ठीक है. तो हम देख सकते हैं आराम से कि as soon as this particle moves from this point A to the point B, what happens is the angle is covered. ये angle कुछ cover करता है वो, तो उस angle को हम बोल देते हैं यहाँ पे theta. And if it is very small, then it can be called as a delta theta. Okay, delta theta. And that delta theta, that is to be divided by delta t, that is the time interval. So ये जो delta t time interval है, तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे that is going to be the angular velocity, average angular velocity. So average angular velocity in this interval can be found out to be actually equal to delta theta upon delta t, बराबर. And if we take the limit of this ratio as delta t tends to 0, then inevitably we can get the derivative. So we can call it as d theta by dt, which is simply the rate of change of the angular displacement with respect to time. So in this way, this is actually the definition of angular velocity, remember. And here, why this delta theta tends to, or delta t tends to 0, the limit of delta t tends to 0 is necessary because we want to find this angular velocity at an instant of time. एक particular instant पे ही हमको ढूंढ के निकालना है. Okay, तो इसलिए यहाँ पे क्या है ना कि जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो है वो निकालने के लिए हमको जरूर ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत बहुत छोटा लेना पड़ेगा और टाइम इंटरवल जो है तो वो भी बहुत छोटा लेना पड़ेगा जरूर. देखो जैसे ये भी हम समझ सकते हैं, अगर सपोज ये जो एंगल है तो ये अगर बहुत बड़ा लिया जाए तो ये सपोज एक टी टाइम के अंदर अगर ये पार्टिकल ठीक है थीटा इतना एंगल कवर करके पॉइंट बी पे आ जाता है, सपोज मान लेते हैं. ओके, और सपोज कि आफ्टर दैट इन अ वेरी स्मॉल टाइम डेल्टा टी, एक बहुत छोटे इंटरवल के अंदर डेल्टा टी इतने इंटरवल के अंदर अगर ये पार्टिकल थोड़ा मूव होता है इधर से इधर तक, देखो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक पॉइंट बी से एक पॉइंट बी डैश तक, ये पॉइंट को हम बोल देंगे बी डैश सपोज. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी बी डैश. यस, सो बी और बी डैश के बीच में जो एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम बोल सकते हैं डेल्टा थीटा. और ये जो टाइम इंटरवल है बी और बी डैश के बीच में का, तो उसको हम बोल सकते हैं डेल्टा टी. करेक्ट है. सो दिस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी रेशियो as delta t tends to 0, as this delta t will tend to 0, what will happen here is this b dash will move more and more close to b here. And in the limiting case, we can say in the limiting case
this b dash will just coincide on b, and in that case we'll get the exact angular velocity at point p at point b here. तो इस पॉइंट बी के ऊपर का जो एंगुलर वेलोसिटी है तो वो निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस डेल्टा थीटा को कम करना होगा, डेल्टा टी को भी कम करना होगा. As this delta t goes on tending to move to zero, delta t as this delta t goes on moving or goes on changing to shrinking more and more, what happens is this delta theta also goes on changing, and this delta theta also goes on shrinking to zero. And in the limiting case, the limiting value of this ratio is actually called as the angular velocity at this particular point. Okay. जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर तुमको देना है ये एंगुलर वेलोसिटी का, अगर हमको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे. सपोज एक फैन है, ठीक है, ये फैन, और मान लो कि इसके 3 ब्लेड्स जो है यहाँ पे, yes, suppose we have the fan here and suppose it's rotating, तो मान लो कि रोटेट हो रहा है, ये उसके ब्लेड्स है, ओके, सपोज ये दूसरा ब्लेड है, और ये उसका तीसरा ब्लेड है. Okay, and suppose that in a small time, if we take a photograph of this fan while revolving with a very high resolution camera, okay, हमारे पास एक सपोज एक बहुत अच्छा कैमरा है, और अगर मान लो कि उस कैमरा से अगर हम इस फैन का फोटोग्राफ निकालते हैं, ठीक है, तो और उस फोटोग्राफ के अंदर ये जो फैन है उसका पोजीशन सपोज हमको ऐसे मिलता है, ऐसे पोजीशन पे वो है, ये हमको पता चलता है, ठीक है, इस फोटोग्राफ के अंदर. और उसके बाद तुरंत, मतलब फोटो निकालने के बाद तुरंत एक 0.1 सेकेंड के बाद अगर हम एक दूसरा फोटोग्राफ उसका निकालते हैं, देखो ठीक से, अभी उसी फैन का हमने दूसरा फोटोग्राफ निकाला, राइट. तो दूसरा जो फोटोग्राफ है तो वो सपोज मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, ये सपोज येलो कलर से वो ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ठीक से. तो दूसरे फोटोग्राफ के अंदर उसके जो ब्लेड्स है वो थोड़े मूव हो चुके होंगे, तो हम देख सकते हैं आराम से. ये फर्स्ट वाला जो ब्लेड है वो सपोज यहाँ पे आ चुका है, ये देखो. ये सेकंड वाला जो ब्लेड है वो भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस आगे मूव कर चुका है, और ये जो थर्ड वाला ब्लेड है वो भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस या कुछ ना कुछ एंगल से घूम चुका है. मतलब हम देख सकते हैं क्लियरली कि फैन तो वही है, सिर्फ वो फैन जो है वो कुछ ना कुछ एंगल से घूम गया. देखो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पहले वो फैन यहाँ पे था, ए बी सी इस पोजीशन पे वो पहले था, और एक डेल्टा टी टाइम के अंदर, मतलब डेल्टा टी कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू वेरी स्मॉल टाइम, दैट इज 0.1 सेकेंड सपोज. तो ये 0.1 सेकेंड के अंदर क्या हुआ, ये फैन जो है वो ए डैश, बी डैश और सी डैश ऐसे पोजीशंस पे आ गया, देखो ठीक से. तो अगर ऐसे हो गया तो इसमें हम देख सकते हैं आराम से कि ये जो फैन का जो मोशन है, तो जिस एंगल से वो रोटेट हुआ वो एंगल बहुत छोटा होगा. वी कैन जस्ट put the two photographs on each other and just observe that angle, how small it may be. If suppose it is like 2.5 degree, so we can convert it into radian and just have this angular velocity to be found out to be equal to 2.5 degree divided by this 0.1 seconds. Okay, तो angular velocity हमने कैसे निकाला, यहाँ पे डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये करके निकाला.
बट ये इससे भी आगे जाके ये जो टाइम इंटरवल है वो जितना हम छोटा करेंगे उतना हमको ये एंगल छोटा होगा, और उस केस में जो रेशियो है वो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट एंगुलर वेलोसिटी बनेगा इस पॉइंट ए के ऊपर का. Otherwise, it will become the average angular velocity over this interval a to a dash, right? Or b to b dash, we can say, or c to c dash. In general, in this time interval delta t, that angular velocity will be the average one. But if we want to find out the instantaneous angular velocity, then we have to take the limit of this ratio as delta t tends to 0. That means we have to go on shrinking this time interval to 0. जितना हो सके उतना ये टाइम इंटरवल हमको कम कम करते जाना है, एंड इन द लिमिटिंग केस ओनली वी कैन गेट द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फाउंड आउट. ओके, तो ये बात हमको यहाँ पे समझनी है ठीक से. चलो ठीक है. तो अभी देखो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है वो तो हमने समझ लिया, नो डाउट. बट नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड इन फैक्ट व्हाट इज बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, तो ये हमको अभी समझना है कि व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन. लेट अस सी. Yes. Now we'll see first what is the angular acceleration basically, and then we'll see what is the angular instantaneous angular acceleration exactly. So suppose that we have a circle once again, and suppose that a particle starts from this point A, and when that particle was at point A here, its angular velocity, initial angular velocity at that point was omega 1, suppose. And suppose that it goes to the point B here and its angular velocity becomes omega 2 here. तो यहाँ पे 2 सेकेंड पॉइंट पे आने के बाद उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा 2 बन गया. चलो ठीक है. तो अभी इस केस में एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हुआ तो वो हमको निकालना है एक्चुअली. तो देखो उसका एंगुलर वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे कितना है, देखो ठीक से. At this point A here, the angular velocity will be omega 1, right? And suppose that at point B here, the angular velocity of the particle will be omega 2, right? So that what is the change in angular velocity when the particle goes from A to point B here? And suppose that t is the time interval, okay? तो यहाँ पे angular acceleration जो है, तो angular acceleration is actually defined as the ratio of change in velocity, okay, change in angular velocity, okay, change in angular velocity upon time. This is the basically definition of angular acceleration. So this angular acceleration will be equal to, तो यहाँ पे change in angular velocity कितना है, initial angular velocity is omega 1 and final angular velocity is omega 2. So the change in angular velocity will actually be equal to omega 2 minus omega 1, and that is to be divided by time, that is t here. So ये t जो है वो t से हम डिवाइड कर देंगे, जिससे ही हमको angular acceleration का फॉर्मूला मिल जाएगा. Angular acceleration is always denoted by alpha, and it is actually expressed as omega 2 minus omega 1 upon t, or we can also call it as t2 minus t1, no problem. t2 minus t1, इसको भी हम actually final time interval और initial time instant ऐसा भी बोल सकते हैं. And उससे भी आगे जाके this alpha can also be expressed as delta omega upon delta t, okay? तो ये just matter of symbols है, अलग अलग symbols हम यहाँ पे use कर रहे हैं.
तो इवन यहाँ पे भी डेल्टा जो है उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं. But all these are the formulae for finding this angular acceleration, remember. But now we will see what is the instantaneous angular acceleration here. So what do you mean by the instantaneous angular acceleration is, see, suppose that at some particular instant the particle is at a point P here. अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सर्कल में एक पार्टिकल जो है वो यहाँ पे P पॉइंट पे है, सपोज ये देखो यहाँ पे वो पार्टिकल है P पॉइंट पे, ओके, और उसका उस समय का जो एंगुलर वेलोसिटी है तो वो सपोज ओमेगा है, और थोड़ा पार्टिकल जो है वो थोड़ा अगर आगे बढ़ता है तो उस समय जो उसका एंगुलर वेलोसिटी है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, और वो सपोज बन जाता है ओमेगा प्लस ओमेगा डैश और डेल्टा ओमेगा. देखो है नेक्स्ट यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे इस पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना है, ओमेगा है, चलो ठीक है. बट अभी बी पॉइंट पे जैसे ही वो जाता है तो वहां पे उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना बन गया, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा. ओके, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, मतलब ये थोड़ा बढ़ गया है. ओके, और ये जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो वो उसका टी टाइम पे था सपोज, और ये जो ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सपोज उसका टी प्लस डेल्टा टी इतने टाइम इंटरवल पे है सपोज. तो उस केस में हम देख सकते हैं कि अल्फा दैट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये एवरेज था, इसको हमको एवरेज बोलना होगा, तो उसको हम नीचे एवी लिख देंगे, इसका मतलब एवरेज हो गया. ठीक है, so average angular velocity can be average angular acceleration can be found out by this formula, no doubt, or we can also use this formula here for finding this average angular acceleration, no doubt. But if you want to find out the instantaneous angular acceleration, then we will have to take the change in angular velocity here. तो यहाँ से यहाँ तक angular velocity में change कितना हो गया, omega plus delta omega minus omega, so that omega omega gets cancelled and we are left with simply delta omega, and that is to be divided by this time interval. तो यहाँ पे t2 मतलब कितना है, t plus delta t है, और t1 मतलब कितना है, सिर्फ t है, तो इसलिए फिर यहाँ पे t plus delta t minus t अगर करेंगे तो यहाँ पे t कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा नीचे यहाँ पे delta t simply. And we have to take the limit of also limit of this ratio as delta t tends to 0, and then we can get this expression for alpha, that is instantaneous angular velocity. And since this limit of delta omega upon delta t as delta t tends to 0 is taken here, we can call it as derivative also. So we can express it as d omega by dt. So simply take the derivative of omega with respect to time and you will get the instantaneous angular acceleration of that particle. Okay, तो इस तरह से हमको instantaneous angular acceleration निकालना होता है एरोमेटिक से. ठीक है, एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो हम नोट कर सकते हैं आराम से. एसआई यूनिट ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी एक्चुअली, अभी देखो डेल्टा ओमेगा, तो डेल्टा ओमेगा का यूनिट क्या होता है हमको पता है ऑलरेडी, इट इज एक्चुअली देयर रेडियन पर सेकेंड, राइट, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट. सो टाइम का यूनिट क्या होता है, इट इज सेकेंड अगेन, so therefore we can get this as radian per second, which is nothing but radian per second squared. This is actually going to be the SI unit of angular acceleration, remember. Okay, अभी इसके अंदर अगर कुछ डाउट है आपको तो पूछ सकते हो आराम से. What is instantaneous angular acceleration and what is the average angular acceleration? And obviously its direction is again given by right hand rule, as we have just talked out last time. तो लास्ट टाइम भी हमने ये बोला था कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर एक्सेलरेशन है, इन सब का जो डायरेक्शन है वो हमेशा राइट हैंड रूल से दिया जाता है, राइट हैंड रूल से. तो अगर सपोज सर्कल इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उस डायरेक्शन में फिंगर्स टर्न करेंगे तो हमको डायरेक्शन मिलेगा आउटवर्ड्स. सो आउटवर्ड डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमको मिलेगा. बट अगर सपोज उल्टा अगर घूम रहा है पार्टिकल, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूम रहा है, तो वी टर्न योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम दिस along this turn along the sense of rotation, and automatically the thumb gives the direction of angular velocity or angular displacement. तो इसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा. अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है
So when the angular velocity is increasing, angular acceleration will be in the same direction as that of the angular velocity. तो जो angular velocity का डायरेक्शन है वही angular acceleration का भी डायरेक्शन होगा अगर angular velocity बढ़ रहा है तो. लेकिन अगर angular velocity कम हो रहा है, जैसे हम फैन स्विच ऑफ करते हैं तो उसका angular velocity कम 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 होता जाता है, तो उस केस में भले फैन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो हमारे फिंगर्स जो है वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करके उसका जो डायरेक्शन मिलता है थंब से, तो वो हम निकालेंगे. तो मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन के उल्टा होगा अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रहा है तो, और अगर एंगुलर वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो उस केस में फिर जो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसी उसके पैरेलल में ही होगा. बिल्कुल. तो ये सब चीजें हैं जो हमको याद रखनी है यहाँ पे. This is all about the angular acceleration. Remember correctly. Okay. तो इसके ऊपर 2-3 एग्जांपल समझ लेंगे फटाफट. Okay, so take down the question. The angular velocity of a particle in circular motion changes from 2 radian per second to 38 radian per second in चलो 2 radian per second to 40 radian per second in 1.9 seconds. Can you find out the angular acceleration in this case? Yes. How will you get the angular acceleration? Average, obviously. Average angular acceleration हमको निकालना है यहाँ पे. So already हमारे पास formula है alpha. Average alpha is always equal to omega 2 minus omega 1 upon t. So that we can get this as omega 2 is 40 minus omega 1 is going to be 2, right? And if we divide it by 1.9 seconds, that is the time interval, then we can get it as 38 upon 1.9, which can also be written as 380 upon 19. And as we know that this 19 ones are 19 and 19 twos are 38. So we can get it as 20 radian per second square. That's it. That is going to be the angular acceleration of this particle simply. चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट. Angular velocity or suppose angular velocity of a particle changes by 30 radian per second in 5 seconds. Find its angular acceleration. Yes, just oral answer. Angular velocity of the particle changes by 30 radian per second in 5 seconds. So formula क्या है हमारा? Alpha is equal to omega 2 minus omega 1 upon t, right? And the change in angular velocity is directly given here. ये जो 30 है, yes, ये 30 ही actually change in angular velocity है. मतलब 30 यहाँ पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का ही वैल्यू 30 दिया है और टाइम तो 5 है ही, नो डाउट. सो दैट वी कैन गेट दिस एज 30 upon 5, that means 6 radian per second square. That's it. Very good. Correct. चलो और एक करो. The
a fan starts from rest and attains a speed of 150 revolutions per minute in 1 minute. Okay, then find its angular acceleration, मतलब अल्फा. अब ये करके दिखाओ, देखिए किसको आएगा. Fan starts from rest and attains the speed of 150 revolutions per minute in 1 minute. मतलब अब देखो इसका जो स्पीड है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, ओमेगा 1 कितना है यहाँ पे, वो तो 0 है, नो डाउट, वो तो क्लियर पता चल रहा है हमको. बट व्हाट इज ओमेगा 2 हियर? ओमेगा 2 यहाँ पे जो अटेन करेगा वही तो ओमेगा 2 बनेगा ना. लेकिन यहाँ पे ये जो 150 आरपीएम है, ये 150 आरपीएम एक्चुअली भले उसको बोला स्पीड है, लेकिन एक्चुअली वो स्पीड नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी है, फाइनल फ्रीक्वेंसी है वो. उसको हम चाहिए तो n2 बोल सकते हैं, n2 which is actually going to be 150 rpm. एंड आरपीएम को मैंने लास्ट टाइम बताया था तुमको कैसे कन्वर्ट करने का आरपीएस में. तो उसके लिए तुमको 150 को 60 से डिवाइड करना पड़ता है सिंपली, राइट. तो अगर इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो वो हमको मिल जाएगा 32 जा 35 जा, दैट मींस इट बिकम्स एक्चुअली 5/2, मतलब ही 2.5 रेडियन, नहीं सॉरी हर्ट्ज. ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी. And this from frequency here we can get this omega 2 actually, and omega 2 can be found out to be equal to 2 pi n2, क्योंकि हमारे पास ओमेगा के लिए फॉर्मूला है, याद है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, ये फॉर्मूला होता है, बराबर. तो अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको ये मिलेगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई n2, मतलब ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई इनटू n2 कितना है, देखो उधर 2.5, करेक्ट है. सो इफ यू पुट इट हियर देन वी कैन गेट दिस एज 5 pi. ओके, so this is going to be omega 2 actually, and omega 1 is already 0, and time given here is 1 minute. 1 minute means 60 seconds, don't forget that, don't take it as 1 only. तो इसलिए फिर यहाँ पे टाइम t जो है वो यहाँ पे हमको 60 seconds लेना होगा, बिल्कुल, जिससे हमको अल्फा मिलेगा. तो देखो अल्फा कितना मिल रहा है हमको, अल्फा मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन है, which is omega 2 minus omega 1, that is to be divided by time t. Yes, so it actually becomes 5 pi minus 0 divided by 60, and hence you can get it as 5 pi by 60. How much it is? It is actually going to be pi by 12. Okay, so pi by 12 radian per second square, and this is actually going to be the angular acceleration of that particle. Getting it? Okay, just take the screenshot of this first so that we can move further. Okay, चलो और एक करके दिखाओ इस टाइप का. देखो से the frequency of a flywheel changes from 4 hertz to 34 hertz in half minute. Okay, find its angular acceleration. Start. This is your question. Find answer fast. Everything is given. The frequency of flywheel changes from 4 hertz to 34 hertz in half minute.
सब कुछ दिया हुआ है। देखो अल्फा के लिए लगता ही क्या है हमको, तीन ही तो चीजें लगती है, ओमेगा 2, ओमेगा 1 और टी, बस। तो देखो ये हमारे पास फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, ये फॉर्मूला है। हाउ विल यू फाइंड आउट ओमेगा 1? It is actually 2 pi n1 where n1 is going to be 4 hertz, correct है? So इसको हम लिख देंगे 2 pi into 4 which has to be 8 pi, correct है, रेडियन पर सेकेंड। चलो ठीक है, तो ओमेगा 1 तो मिल गया, ठीक है। ओमेगा 2 का क्या? हाउ कैन वी गेट दैट ओमेगा 2? ओमेगा 2 is actually going to be 2 pi into n2 where 2 pi into n2 कितना है यहाँ पे, देखो 34, करेक्ट है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। सो इफ वी जस्ट गेट दिस एज, then we get this as 68 pi radian per second, correct है। and now if we just put all these values here, then we get the omega 2 as 68 pi minus omega 1 which is simply 8 pi, and that is to be divided by time which is 30 seconds, so that we can get this as 60 pi upon 30 which happens to be simply 2 pi radian per second square. Yes, it's correct. समझा ठीक से? और just we can just solve this by another method also. See, एक दूसरा simple method इसके लिए है omega 2 minus omega 1 upon t. ये basic formula तो हमारे पास वही है, no doubt. लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इस ओमेगा 2 के बदले ही यहाँ पे डाल देंगे 2 पाई n2 और यहाँ पे 2 पाई n1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डाल सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। एंड देन वी कैन जस्ट टेक दिस 2 पाई कॉमन एंड जस्ट express it in terms of n2 and n1 and then directly put this n2 and n1 here in this formula finally। तो यहाँ पे 2 पाई into ब्रैकेट में यहाँ पे n2 कितना दिया है, ये देखो इधर 34 हर्ट्ज है, तो 34 माइनस n1 कितना है, वो 4 है, तो देखो and that is to be divided by 30, so that we can get this 2 pi into 30 divided by 30 which happens to be simply 30 cancel and we are left with 2 pi radian per second square. This is also another simple method, ठीक है ना, shortcut method. You can use it whenever the acceleration is to be found out and all this angular velocity is not given but the frequencies are given, initial frequency and final frequency is given. In that case we can use it here. चलो ठीक है। अच्छा अभी देखो और एक क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिनिंग टॉप changes from 90 rpm to 60 rpm in 40 seconds. Find angular retardation. अच्छा अभी आप कहेंगे एंगुलर रिटार्डेशन क्या होता है, ये तो हम लोग को सिखाया ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि एंगुलर रिटार्डेशन इज सिमिलर कंसेप्ट ऑफ लीनियर रिटार्डेशन। हमने लीनियर रिटार्डेशन तो देखा है ऑलरेडी। व्हाट इज लीनियर रिटार्डेशन? इट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ओनली बट विथ नेगेटिव साइन, बराबर। अगर एक्सेलरेशन को ही अगर एक माइनस साइन सामने जोड़ दो तो वो रिटार्डेशन बन जाता है, बिल्कुल। दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, ठीक है। तो और वो कभी होता है जब एंगुलर वेलोसिटी कम होता है तभी रिटार्डेशन होता है।
ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 60 आरपीएम एंड 90 आरपीएम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है जो कि ज्यादा है, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है 60 आरपीएम है जो कि कम है। तो द स्पिनिंग टॉप इज जस्ट गोइंग टू स्टॉप एंड दैट्स व्हाई its angular retardation can be found out, and it will be negative actually. Angular acceleration यहाँ पे negative आएगा, and what does that negative sign tells us? That the retardation is negative, no doubt. चलो करो जल्दी, हो गया क्या? What is N1? Tell me. Yes. N1 कितना है यहाँ पे? ये देखो 90 आरपीएम, ये जो है वो N1 है, ओके 90 आरपीएम, यस। बट वी नो दैट आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो लेट अस कन्वर्ट इट बाय डिवाइडिंग इट बाय 60 so that we get this as 3/2 rps, मतलब ही 3/2 hertz, okay, and using that we can find out omega 1 here. तो omega 1 equal to क्या आएगा? 2 pi n1, right? So 2 pi n1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको मिलेगा 2 pi into n1, n1 मतलब 3/2, जो इससे बनता है 3 pi रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट। चलो ठीक है, ये n1 और ओमेगा 1 तो हमको मिल गया, no doubt. What about n2 here? n2 is going to be 60 rpm, see it here, so it is going to be 60 rpm, okay, but we know that rpm is not a standard unit, so 60 has to be converted into hertz by dividing it by 60 only, so we get this as 60 upon 60, मतलब ही 1 hertz, correct है? Once we get n2 we can get omega 2 as well, so omega 2 actually is going to be 2 pi n2, where 2 pi as it is and n2 is going to be 1, right? So that we can get this as 2 pi only in radian per second, no doubt. But now we'll be able to find out this alpha here, because alpha is going to be omega 2 minus omega 1 upon time t here, so that we get this as omega 2, how much it is? 3 pi, देखो यहाँ पे minus 2 pi, and that is to be divided by this time which is going to be there, that is 40 seconds, correct है? तो यहाँ पे आ जाएगा 40, जिसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा pi by 40, and that is going to be in radian per second square, that's it. So this is actually going to be the angular acceleration of the particle here, getting it? Just take the screenshot of this fast. हाँ, correct, very good, very good, very good. Yes, Kashish, actually it should be 2 pi minus 3 pi, you have made a mistake. देखो ओमेगा 2 कितना है और ओमेगा 1 कितना है, चेक करो ठीक से। तो यहाँ पे ओमेगा 2 is going to be this 2 pi here, it should be there in this front, and minus this is going to be the 3 pi, that is omega 1 here. So we can get this 2 pi minus 3 pi upon 40, which happens to be actually minus pi by 40, correct है? And here we can understand what does this minus sign tells us. This minus sign tells us that it is a retardation, okay, it's retardation, and that's why this minus sign is there. So how much is the retardation then? Angular retardation कितना मिला हमको फिर अभी यहाँ पे? ये तो angular acceleration मिला ना, तो angular retardation जब हम लिखते हैं तो उसमें माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो it will be pi by 40 radian per second square, no doubt, okay. So here it should be angular retardation. चलो और एक करके दिखाओ तुम, do it yourself now. A fan is rotating with 300 rpm
it takes 50 seconds to stop. ओके तो वो रुकने के लिए 50 सेकेंड्स लेता है. फाइंड इट्स एवरेज एंगुलर रिटार्डेशन. Find it out. Do it yourself now. थ्री 300 आरपीएम से वो ऑलरेडी रोटेट हो रहा है. ओके और 50 सेकेंड के अंदर रुकता है. ऑब्वियसली आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑफ. ओके yes, very good. ओमेगा 2 will be 0. करेक्ट, वेरी गुड. अरे अलग अलग आंसर कैसे मिल रहे हैं? देखो n1 is given to be 300 rpm, correct है. This is n1, but we know that it should be converted into rps by dividing it by 60. तो वो 60 से डिवाइड करने से वो हर्ट्ज में आ जाएगा. rps मतलब ही हर्ट्ज, तो वो बन गया तुम्हारा 5 हर्ट्ज, करेक्ट है. एंड यूजिंग दिस ओमेगा 1 is equal to 2 pi n1, we can find out 2 pi into 5, which is going to be 10 pi, correct है. so here it is going to be 10 pi radian per second. okay तो ये बन गया तुम्हारा ओमेगा 1 and n2 is going to be 0 and omega 2 is also going to be 0 because the fan stops completely after this 50 seconds. So time is given here to be 50 seconds, right? So you can use it in the formula for alpha, that is alpha is equal to omega 2 minus omega 1 upon t, so that we can get it as omega 2 which is 0 minus omega 1 which is 10 pi, and that is to be divided by this 50 which is time, so that we can get this as alpha is equal to minus 10 pi by 50, and hence 10 gets cancelled and we are left with minus pi by 5 radian per second squared, correct है. So in this way we can get the angular acceleration of that particle, pi by 5 minus pi by 5, right? And this is the angular acceleration actually. If you want to find out the angular retardation, then so angular retardation will actually be equal to pi by 5 only radian per second square. That's it. So this is the answer. Okay. So we have seen today the details of angular acceleration and how it can be found out when the omega 1, omega 2 and time is actually given. Okay. So अभी आज का आपका होमवर्क जो है तो वो यही है कि आपको तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस प्रूव करने हैं सर्कुलर मोशन के अंदर. ओके सर्कुलर मोशन के अंदर के 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस ढूंढ के निकालने हैं. हमने ऑलरेडी जो लीनियर मोशन के अंदर के जो तीनों काइनेमेटिक इक्वेशंस है वो हमने प्रूव भी किए हैं और वो लर्न भी किए हैं. ऑलरेडी हमने यूज भी किए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर उनका हमने यूज भी किया है. चलो ठीक है, बट अभी यहाँ पे आपको सर्कुलर मोशन के अंदर के जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, again there are 3 kinematical equations in circular motion also, and those 3 kinematical equations you have to derive today or sorry tomorrow. okay तो कल का आपका होमवर्क यही है कि आपको घर पे ये तीनों kinematical equations derive करके रखनी है. okay so that's all for today, and we can stop here. Thank you all of you.